meaning of linear independency. Meaning of linear independency means that you cannot write one vector as a linear combination of other one. Then these type of vector can be identified as what? Linear independent vector. So let me give you some example. First I will just tell you what is the actual condition for the linear independent vector, and then we will talk about some different examples. Suppose I have vector. Now I can represent my vector as, let's say, phi1, phi2. What are these? These are sum kit up to, let's say, we have phi n. So there is n number of vectors or n number of function or n number of state. You can say anything about this thing. You can give any name, and you have to always keep in mind this can be function, this can be column vector, this can be simply some type of kit. These are just representation of your state, your vector. So you can, quantum mechanics give you leverages to express your vector, express your function in different way. So this is very interesting. Now, suppose I have n number of vectors, n number of kit, n number of function, then these functions can be linearly independent if we have a equation C1 phi 1 plus C2 phi 2 up to, let's say, Cn phi n, and that must equal to 0. So you have this particular equation. You have to create one particular equation, and this equation is nothing but C1 phi 1, C2 phi 2 up to Cn phi n is 0. And if there is a unique solution, if there is only solution, and what is that solution? That solution is C1 is equal to C2 is equal to C3 up to Cn is equal to 0. Then you can say phi 1, phi 2, and all about your phi n can be is linear independent vector. Linear independent vector or linear independent function, you can see. So all Cn must be 0. If any one Cn will have non-zero solution, then obviously they are not linearly independent functions. So this is a method to check whether your functions are linearly independent or not. And if you get the linear independent vector, you can treat them as a basis vector, and you can write any vector in a basis of these linear independent vector. Are you getting my point? So let's try to go for a some example. पहले वेक्टर के टर्म में करेंगे, फिर फंक्शन के टर्म में करेंगे, and we will just check whether these functions or these vectors are linearly independent vectors or not. यहां तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो. Okay. Now let's try to go for an example. Let us assume phi 1 is 1 0 0, phi 2 is 0 1 0, phi 3 is 0 0 1. Let us have this type of three vectors. We have to check whether these three vectors are linearly independent or not. So how many coefficient you need? How many scalar number you need? 3 scalar number you need. So I can create an equation, and that equation is C1 phi 1 plus C2 phi 2 plus C3 phi 3 must be equal to 0. And I can create an equation C1 1 0 0
plus C2 0 1 0 plus C3 0 0 1, and that must be equal to 0. And from here, if you are going to equate, and if I am writing this thing as a 0, that means I am writing 0 0 0. Are you getting my point? Because vector plus vector is equal to vector. So you can solve this equation. What you will get? C1 is equal to 0. C2 is equal to 0. C3 is equal to 0. So all these three number is 0. That is the only solution you can have. And that means these vectors are linearly independent vectors. And when these vectors are linearly independent vector, you can treat them as a basis vector. If I am talking about basis vector, you can analogically think that they can treat as some I, J, K cap kind of thing. But it is not necessary that all linearly independent vector are orthogonal. Please mind this particular statement. I will just give you example also. Don't worry. Here, these are linearly independent, but they are also orthogonal vector. So it may be possible that your vectors are linear independent and they are orthogonal. It may be possible your vectors are linear independent, but they are not orthogonal. For example, you can take this type of vector. Suppose I have a rectangular vector. So rectangular, suppose I have this thing, this vector is 1, 0, and this vector defined in a plane, and this vector I can say 0, 1. So these two vectors are orthogonal as well as linearly independent. You can easily check. C1 1 0 plus C2 0 1, that means equal to 0. So C1 is equal to 0, C2 is equal to 0, and you can also take the dot product or a scalar product between these two vector. They are 0. Hoga na? Just check it. Hoga ki nahi? Let us assume this is your phi 1 into two-dimensional plane. This is your phi 2. What will be your phi 1, phi 2? 0. 0. Now I am giving you another example. Suppose this vector is 1, 0, and another vector is something like this. And let's say this vector is 1, 1. ले सकते ना? And check whether these two vectors are linearly independent or not. So let us assume this is my phi 1, and let us assume this is my phi 2. What will happen? Phi 1, phi 2? First, we will check whether they are linearly independent or not. So you have C1 phi 1 plus C2 phi 2 must be equal to 0. And then you can write C1 1 1 plus C2 1 0. That must be equal to 0. So you have C1 plus C2 must be equal to 0. And C1 is equal to 0. And the solution is that if you are going to solve these two equations simultaneously, then C1 is equal to 0, C2 is equal to 0. Yes? So it is not necessarily that all linear independent vector are orthogonal. But every orthogonal vectors are linearly independent. That is beauty of orthogonal vector. So just write a statement and then we can all again go for some more example. यहाँ तक clear है ना? Sir, Mm-hmm. sir, if all orthogonal vectors are linear independent, then why we need this linear independence? Sir? We can. Sorry, क्वेश्चन मैंने समझा. सर जैसे अपन बोल ले रहे हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर सारे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो सर फिर ये लीनियर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का क्या यूज है? मतलब सर देखो, सिंपल सी बात है कि आप बेसिस कैसा चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है ना. यस सर. ये जरूरी नहीं है कि आपका बेसिस जो हमेशा आप ऑर्थोगोनल चाहो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर. ये भी हो सकता है कि आपका बेसिस वेक्टर आप चाहो कि ऑर्थोगोनल नहीं हो. तो बेसिस होने के लिए वेक्टर का क्या होना जरूरी है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. इट इज नॉट नेसेसरली और बेसिस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर। ये आपकी चॉइस है कि आप ऑर्थोगोनल बेसिस चाहते हो या नहीं चाहते हो. यस, बट इन जनरल इन क्वांटम मैकेनिक्स वी ऑलवेज यूज ऑर्थोगोनल बेसिस एंड इनफैक्ट ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, है ना. बट हाँ सर। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज नॉट नेसेसरली दैट योर ऑल बेसिस वेक्टर आर ऑर्थोगोनल. It is depends to your choice of vector. It will depends your choice of mathematics that which type of basis you need. Are you getting my point? ये सर मतलब सर किसी सिस्टम को अपन डिफाइंड करते हैं तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सिस्टम के आधार पे अपन डिफाइंड करेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल या लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस। आपको अपनी मैथमेटिकल चॉइस के बेसिस पर बेसिस वेक्टर का को लेना है, ठीक है ना. आपका क्या मैथमेटिकल चॉइस है आपको, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकल चॉइस ऐसा है कि यू नीड योर बेसिस वेक्टर हैव टू बी व्हाट, ऑर्थो नॉर्मल. अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई जगह पर वो नहीं मिले. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ऐसा भी हो सकता है. So just go for one particular statement, and this statement is a very heavy statement, and always try to use this statement. but उससे पहले कुछ और प्रॉब्लम लिखते हैं, करते हैं, उसके बाद फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना? यस सर, गॉट इट। आपके एग्जाम में आता है 3 वेक्टर दे देगा, पूछेगा कि कौन सा ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेक्टर है, कौन सा ऑर्थो नॉर्मल एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। है ना. नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर, चलो ये आप करके मुझे दिखाओ. फाइव वन इज इक्वल टू 1/√2 110. Pi 2 is equal to 1/√2 1 minus 10, and let's say pi 3 is equal to 1/√2 0 0 1. Is that these vector are linearly independent vector? Just check it. चेक कीजिए तो. बोले पापा आ गए। Sir, second one is 1 minus 1 0. हाँ, 1 minus 1 0. यस सर। So they are linearly independent. कैसे आपने चेक किया? C1 phi 1 plus C2 phi 2 plus C3 phi 3 must be equal to 0. So you have 1/√2 110 into C1 plus 1/√2 1 minus 10 C2 plus C3 0 0 1 must be equal to 0. So यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? C3 must be equal to 0 और C1 plus C2 must be equal to 0. इन दोनों इक्वेशन से 1/√2 को तो कॉमन ले सकते हो, यस या नो, है ना. And second is what? C1 minus C2 is equal to 0. So from here, obviously we have only one solution. C1 is equal to 0, C2 is equal to 0, C3 is equal to 0. So they are what? Orthogonal. Sorry, they are what? Linearly independent. Now आप जरा चेक करो तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है या नहीं. चेक करो. 5 1 5 2 की वैल्यू क्या हो रही है, and what will be value of 5 1 5 3, and obviously you can also check 5 2 5 3. देखो तो क्या आ रहा है. What is your 5 1 5 2? 0 सर। 0. That means they are what? Orthogonal. 5 1 5 3? 0 0. 5 2 5 3 is also 0. ठीक है ना. So these vectors are linearly independent as well as these vector are orthogonal in nature too, है ना. क्लियर है ये?
यस सर क्लियर। ओके, किसी का वीडियो ऑन है, आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, है ना तीर्था? ओके गुड। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शन के लिए देखते हैं। लेट अस एज्यूम phi1x is equal to 1, phi2x is equal to x, phi3x is equal to x square. So these three vectors are linearly independent or not? So you can just go for C1 into phi1x plus C2 into phi2x, C3 phi3x must be equal to 0, C1 into 1, C2 into x, C3 into x square must be equal to 0. And you can equate the coefficient of constant here. What you will get? लीनियर इंडिपेंडेंट। Obviously, C1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0. You can equate the coefficient of x to the power 1 on both sides. What you will get? C2 is equal to 0. You can equate the coefficient of x square on both sides. Then you will get C3 is equal to 0. So yes, these vectors are also what? Linearly independent. Are you people comfortable? यस सर। है ना? And so you can take one more problem, और भी different problems देख सकते हो। phi1 x is equal to e to the power minus alpha x square. phi2x ये हमने किया भी था, that is x e to the power minus alpha x square. What is value of x? Let's say x will go from minus infinity to plus infinity, and here x is again go from minus infinity to plus infinity. Whether these two functions are linearly independent? Obviously, you can just go for C1 phi1x plus C2 phi2x must be equal to what? 0. And you can write C1 e to the power minus alpha x square plus C2 x e to the power minus alpha x square must be equal to 0. You can again take e to the power minus alpha x square common, and you have C1 x times C2 must be equal to 0. So you have e to the power minus alpha x square cannot be equal to 0. Then this term equal to 0, है ना? C1 plus x C2 must be 0. Now what is value of C1 and C2? 0 सर। 0. है ना? You will equate the coefficient of constant on right side. You will equate the coefficient of x on right side. And what you will get? C1 is equal to 0. You will get C2 is equal to 0. So these vectors are very useful vectors which are linearly independent. जरूरी नहीं कि हर एक वेक्टर linearly independent हो. Obviously, if you have parallel vector, obviously they are not linearly independent, isn't it? For example, if I have x and 5x, is that this vector are linearly independent? No, you No, can sir. just check C1x plus C2 5x is equal to 0, and you can take x as a common, and you have C1 and 5 times C2 must be equal to 0. X cannot be 0. So C1 is equal to minus 5C2. Yes, one solution is 0, 0, but there are more than this solution also. You can have C2 is equal to 1, then C1 is equal to minus 5. You can have C2 is equal to 2, then C1 is equal to minus 10. So they are highly dependent vector, and actually they are parallel vector. You have, suppose we are treating this as a vector or function belongs to Hilbert space, then 5 times of this will be this one. So this will be in the same direction. This will represent in the same direction. Only magnitude is going to change.
Increasing magnitude. Increasing magnitude, exactly. So this kind of thing is there. So more or less these two vectors are mainly same vectors. So you have to be very much conscious when you are talking about basis that your basis have to be linear independent. But there is our choice that we need our basis as a orthogonal vectors. Mainly in quantum mechanics, that works very nicely because we can treat them just like as a I vector, J vector, and K vector. And so I can make a statement and you can use this statement in a very nice way. यहाँ तक clear है ना? Yes, sir. So statement is very interesting and you have every orthogonal vector are linearly independent vector but every linear independent vector basically vectors are not necessarily orthogonal. Okay, so you have to always take care of this statement. And in general, most of the cases, we need orthogonal basis vector in quantum mechanics. ठीक है? So in general हम जो quantum mechanics में जो basis in general बात कर रहा हूं, it is not necessary that every time you need a orthogonal vector. Depends on आपको क्या चाहिए, किस तरह की situation चाहिए, इसके ऊपर भी बात हो सकती है. But in general, I can say that we need our basis vector have to be what? Orthogonal. तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऑर्थोगोनल वेक्टर ढूंढो, वो अपने आप में क्या होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, है ना? Yes, sir. है ना? सो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्थोगोनलिटी से काम चल जाता है. एंड इफ योर वेक्टर आर ऑर्थोगोनल एंड यू कैन इजिली नॉर्मलाइज एनी वेक्टर इफ इट इज नॉर्मलाइजेबल, है ना? हर एक वेक्टर को आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो. क्या हर एक वेक्टर को नॉर्मलाइज कर सकते क्या? यस या नो? No, sir. No, if that vector is square integrable, then only you can normalize, isn't it? Yes. है ना? So you have to be always take care of this particular thing. अभी तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए, and then we will go for our next subtopic, that is what? Operators and matrices. सर हम्म. ये लास्ट स्टेटमेंट आपने जो बताया थोड़ा दोबारा बता दीजिए. ये वाला इन जनरल नहीं सर, वेक्टर नॉर्मलाइजेशन. मैंने ये कहा कि हर एक वेक्टर को आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो. इफ वेक्टर आर नॉर्मलाइजेबल देन ओनली यू कैन नॉर्मलाइज. और कौन सा वेक्टर नॉर्मलाइजेबल होंगे? दोज वेक्टर हु आर स्क्वायर इंटीग्रेबल. इफ योर वेक्टर्स आर नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल, यू कैन नॉट नॉर्मलाइज इट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. है ना? मैं आपको एक क्विज दूंगा करने के लिए, तो आप पहले उस क्विज को करोगे तो आपका माइंड बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा. ठीक है?
बट अभी पहले हम लोग सीख लेते हैं. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट सब टॉपिक. This is very important in quantum mechanics that you can understand different type of operators. Okay, so let's try to go for understanding the operators. यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. बस अब लास्ट मैथमेटिक्स है, इसे समझ लेंगे तो एवरीथिंग इज केक वॉक फॉर अस. इसके बाद सीधे थोड़े से टूल्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स सच एज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, मैथमेटिकल टूल्स, प्रोबेबिलिटी के टूल्स, एंड देन you can go directly to the postulates. ठीक है? Okay. So, in quantum mechanics, in general, and this topic is basically operators. And these operators in a quantum mechanics is a linear operator. कैसे operator की बात करते हैं? Linear operator. Why these are linear operator? Because they are operating linearly. Now, first let me tell you what is your operators. So in general, in a quantum mechanics, we can represent any operator by a capital Roman letter, and you can give hat on this. A operator, B operator, there are n number of operators. So what are these operators? If you want to do any operation, कोई एक ऑपरेशन का नाम जानते हो आप? कोई बता सकते हो? Multiplication. Multiplication is operation. Very nice. Addition is operation. है ना? Yes. Yes, sir. ये सारा नंबर सिस्टम के लिए ऑपरेशन हम यूज करते हैं, है ना? नाउ हियर इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू एनी ऑपरेशन, यू नीड सम ऑपरेटर. सिंपल. जैसे आपको पार्टिकल को x से x प्लस a पर ले जाना है, यू नीड अ सम ऑपरेटर. वो ऑपरेटर क्या होगा, दैट इज डिफरेंट इशू. सपोज आपके पार्टिकल को रोटेट करना है, यू नीड सम ऑपरेटर. सपोज आपको अपने पार्टिकल का मोमेंटम चेक करना है, कितनी मोमेंटम है, किसी भी सिस्टम में पार्टिकल उसकी मोमेंटम क्या, यू नीड मोमेंटम ऑपरेटर. Suppose you want to measure the energy of a particle, you need some energy operator which is popularly known as Hamiltonian operator. Are you getting my point? Yes, sir. जो भी काम, सपोज आपको पार्टिकल को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाना है, ये भी तो कर सकते हो. यहां पार्टिकल है, इसको एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाना है, यू नीड सम डिफरेंट ऑपरेटर. So whatever operation you are doing, you need some mathematical operator, and they can be represented by capital Roman letter, and you can give the hat on this. And what is meaning of that operator? If this operator is going to operate on kit, so how it is going to operate on kit? Now this is very interesting. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश करो. You have some kit, and if you have operator, you have to always operate it from the left. जहां ये जो 1 बना हुआ है, ये जो आपका लाइन है, this is nothing but one identity, है ना? And this is to adjust a operator. And in general, the representation of a operator is mainly square matrix. If you have any basis vector, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले हम जस्ट ऑपरेटर की बात करें. So what is operator? Is a mathematical operation.
operators are mathematical operation, some mathematical operation जिससे कि आप कोई फिजिकल कैलकुलेशन कर पा रहे हो, एनर्जी को मेजर करना है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर मिलेगा जिसके थ्रू आप एनर्जी को मेजर कर सकते हो। मोमेंटम को मेजर करना है, आपको एक्स से पार्टिकल को माइनस एक्स पर लेकर के जाना है, यू कैन हैव सम ऑपरेटर। Whatever you want to do in a quantum mechanics, you need an operator. ये ऑपरेटर या तो फंडामेंटली डिफाइंड है या फिर आप उसे क्रिएट कर सकते हो विथ अ मैथमेटिक्स, विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। यहां तक क्लियर है चीजें? यस सर। है ना? सो नाउ इफ ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन अ किट, और किधर से ऑपरेट, किट पर ऑपरेट होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जहां पर ये डंडा है वहीं से। इट विल गिव यू और इट मे गिव यू सम अनदर फंक्शन और सम अनदर वेक्टर। सेम वेक्टर भी हो सकता है। अगर सेम वेक्टर होगा तो ये ऑपरेटर को क्या कहोगे? आइगन ना, सेम वेक्टर है, एग्जैक्टली सेम मिल जा रहा है, Identical. आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना। You have identity operator if you are operating on this vector and you are getting exactly same vector, then obviously this is known as identity operator. हो सकता है you can operate, and in general हम बाद में भूल जाते हैं, बट ऑपरेटर आप समझ के रखो क्या है। सो कैप कैलकुलेशन करते करते भूल जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। सो A operator can operate on phi and you can give some number and you can give the same vector, then this equation is what? इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हो? आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू इक्वेशन, है ना। इस तरह का इक्वेशन अगर मिल जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। बट इन जनरल एक ऑपरेटर अगर किसी फाई पर ऑपरेट करेगा तो साई मिल जाएगा। सो क्या मिल रहा है, क्या ऑपरेटर, इन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण ही आपको पता चलेगा कि ऑपरेटर का क्या रोल है। नाउ इफ समवन इज राइटिंग दिस थिंग, सपोज किसी ने गलती से ऐसा लिख दिया, इसका कोई मीनिंग होगा क्या? नो नो, दिस थिंग इज वॉइड। वर्ड का मतलब क्या है? नो मीनिंग, है ना। नो मीनिंग, मीनिंगलेस है। सो ऑपरेटर जब भी ऑपरेट करेगा किट के ऊपर तो किधर से ऑपरेट करेगा? फ्रॉम लेफ्ट। और अगर वो और किट के ऊपर ऑपरेट करेगा तो आपको किट ही देगा। सो दैट मीन्स दिस ऑपरेटर, तो बता सकते हो कि इस ऑपरेटर का नेचर कैसा होगा जो कि किट पर ऑपरेट करके किट ही देगा? मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रो मैट्रिक्स, हाँ, रो मैट्रिक्स अगर कॉलम मैट्रिक्स पर जाएगा तो नंबर देगा, isn't it? है ना। तो एक किस तरह का मैट्रिक्स हो सकता है अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप अगर चीजों को देखना चाह रहे हो तो? Unitary matrix. ऑलवेज यूनिटरी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स, इट मे बी सम स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली। अरे स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स पर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा वो? कॉलम मैट्रिक्स। And that matrix can be unitary, that matrix, that square matrix can be unitary, that square matrix can be Hermitian, that square matrix can be antisymmetric, that square matrix can be symmetric, depends on your choice कि आपको क्या choice है। But in general, operator A is equivalent to some square matrix. सम स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में आप उसे दिखा सकते हो, आप उसे शो कर सकते हो। जैसे इस किट को आप किसके टर्म में दिखाते हो? एक कॉलम वेक्टर के टर्म में दिखाते हो
उसी तरह ऑपरेटर को आप स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में दिखा देते हो इन अ बेसिस, इन गिवन बेसिस। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, अभी रहने देते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इन अ गिवन बेसिस। नाउ सिमिलरली आपके पास अगर कोई फाई ब्रा है, तो अब ब्रा पर ऑपरेटर किधर से लगेगा? राइट साइड से। ब्रा पर ऑपरेटर किधर से लगेगा? दैट विल एक्ट फ्रॉम द राइट साइड। लेट अस अज्यूम दिस इज योर बी ऑपरेटर, और अगर ब्रा पर ऑपरेटर ये ऑपरेट हो रहा है तो आपको किट मिलेगा या ब्रा मिलेगा? ब्रा मिलेगा। दैट विल बी ऑलवेज ब्रा। लेट से यू हैव दिस काई ब्रा। Are you people going to understand this thing? Now, why they are linear operator? Because they will act on a function or they will operate on a function linearly. ये फंक्शन के ऊपर कैसे ऑपरेट होगा? लीनियरली ऑपरेट होगा। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। Yes. Now, just a minute. Okay. So, we have basically linear operator. Why they are linear operator? Suppose you have a operator and this is going to operate on a1 phi 1 plus a2 phi 2. How you will operate it? ये कैसे ऑपरेट होगा? This is a number. a1 a2 is what? A scalar number. They may be complex number. There is not any problem. So how it will operate? A1 A operator a1 phi 1 a phi 1 plus a2 a phi 2. So they can operate linearly. So why they are known as what? Linear operator. And if you have two operator, suppose A operator plus B operator, and you have same dimension, then only you can add it. And suppose it is going to operate on some phi. What is meaning of that? A psi plus B psi. Obviously, A operator will operate on phi plus B operator will also operate on phi. So they are operating linearly. So why they are known as what? Linear operator. Now, let's go for one very interesting point. Suppose we have, and this is very interesting point, let us try to understand. Suppose I have a operator A and it is just going to operate on phi and I am getting some psi. ऑपरेटर ए है, फाई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है? साई मिल रहा है. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट if I am changing this phi and I just want to get this psi, what will happen to this particular operator? Transpose हो जाएगा. Transpose. No, that will be not transpose, rather because this will be a dagger. क्या कहते हैं इसे? A dagger. एक लंबा क्रॉस की तरह आपके चिन्ह बनेगा. What is a dagger? Now you can see this row is going to change, sorry, this column is going to change into row. This column is also going to change into row, but its number, its element will be complex conjugate, isn't it? Yes, sir. So what is a dagger? The a dagger is basically a star. What is meaning of a star?
all element will Okay. be complex conjugate, and then you can take the transpose of this. So A dagger is equivalent to this one. So what you will do? You will first make the complex conjugate, then transpose. Because it is not necessary that element of your matrix will be always a real matrix. They may be imaginary matrix. For example, polyspin matrix, the sigma y is that element is basically imaginary. So you have to always keep in mind. Everyone is comfortable? सर हम्म जो ये सेकंड वाला स्टेप बताया प्लीज एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन कर दें? तो ये जो आपने टैगर वाला पार्ट बताया देखो सर उसके इस डैगर का मतलब क्या है? ए का नहीं स्टार सर लेना और फिर ट्रांसपोज लेना, ठीक है? नहीं सर अबव वाला स्टेप बोल रहे एबव वाला, अच्छा। देखो ए ऑपरेटर 5 पर ऑपरेट किया तो क्या मिल रहा है? साई साई। क्या मिल रहा है? किट या ब्रा? बोलो। ए ऑपरेटर 5 किट पर मिल रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? साई किट। साई किट मिल रहा है ना? ये क्या है? किट है या ब्रा है? कैट किट कैट है। सर नहीं। अब हम क्या चाह रहे हैं? वी वांट कि अगर मेरा 5 ब्रा हो तो उसके ऊपर हम क्या ऑपरेट करें कि साई ब्रा मिले। आर गेटिंग माय ओके पॉइंट? ओके सर है ना? हाँ सो हाँ and this A will be converted to what? A dagger. डैगर जैसे ही किट ब्रा में कन्वर्ट होगा, ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डैगर में कन्वर्ट होगा। और ब्रा में आपकी चीजें किधर से ऑपरेट करेगी? फ्रॉम राइट और लेफ्ट? फ्रॉम सर राइट से राइट से, ठीक है? यस सर जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज आपके पास इंफॉर्मेशन है पाई और इसके ऊपर बी ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, एंड लेट्स से यू आर गेटिंग सम काई। तो किट के लिए ये इक्वेशन क्या होगा? एंड दिस इज ऑल अबाउट डुअल स्पेस। डुअल स्पेस का मतलब बेसिकली किट स्पेस भी है और ब्रा स्पेस भी है। सो किट स्पेस में अगर ए है तो ब्रा स्पेस में क्या हो जाता है? ब्रा के लिए क्या हो जाता है? ए डैगर, है ना? हाँ सर ओके। तो अब अगर सपोज करो आपको ब्रा का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड यू वांट टू राइट इट फॉर द किट इंफॉर्मेशन, व्हाट यू विल डू? बी बी डैगर बी डैगर, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? किट में कन्वर्ट करेंगे। और ये किधर से ऑपरेट करेगा? लेफ्ट से लेफ्ट से। और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैट पे Kit में। Very good. That's it. And this is correspondence between kit and bra. You have, again, if you have information of a kit and operator related to kit, that means you have also information about bra and related to their operator also. यहां तक आप कंफर्टेबल हो? यस सर Okay. So let's try to go for a some property of bra. Sorry, dagger. Some property of dagger. Not bra, some property of dagger. So now you will just tell me very easily. If I have a dagger to the power dagger, what I will get? A. A. Very A. natural. है ना? Very natural. A. If I have some lambda, this is a scalar number and it may be complex number. A, the whole dagger, what you will get? लैम्डा डैगर एडन Lambda star. Lambda is a scalar number, तो उसमें dagger की बात नहीं करेंगे, है ना? That will what? Lambda star, and you will get what? A dagger. Now you have, and these all are very trivial, isn't it? A plus B whole dagger, what you will get?
A dagger plus B dagger. Now, the thing is, next part is very interesting. What will happen? A, B, whole dagger, E dagger, whole dagger. B dagger, A dagger. Okay, so AB whole dagger is equal to B dagger, A dagger. Let me prove this one. These all are trivial. Let me prove this one because this will give you a very good insight all about the operators and its dagger. So let us try to go for this one. Suppose I have A, B, and operating on psi. Now look at here. This is very interesting. Suppose I have three operator A, B, C is operating on psi. Now please tell me which one will operate first on psi? C. So C will operate on psi. It will give you something, some new ket. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And then B will operate on C psi, isn't it? Yes, sir. And then A will operate on BC, sir. BC psi. ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है. सो जो नियरेस्ट होगा वो फर्स्ट ऑपरेट करेगा किट के लिए, उसके नियरेस्ट आफ्टर देन पूरे पर जो मिलेगा उसके ऊपर ऑपरेट करेगा, एंड आफ्टर देन बीसी साई के ऊपर फिर से जो पूरा मिलेगा उसके ऊपर ऑपरेट करेगा. You people are happy? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now, can I write AB और इसे phi दे देता हूं, है ना? AB phi is equal to psi. इसे लिख सकते हैं. Let us assume AB will operate on phi, you will get psi. जरा इसका ब्रा के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे जरा ये बताओ तो. E dagger, A dagger. बी डैगर ए डैगर तो हमें प्रूफ करना है. इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ब्रा के लिए? I को ब्रा ब्रा फाई. वेरी गुड. देन ए बी होल डैगर, है ना? ए बी होल डैगर इज इक्वल टू व्हाट? Bra psi. साई ब्रा. ओके गुड. नजर आ रहा है ना आपको? पूरा बोर्ड है. ओके गुड. नाउ if this is true for the ket space, this is true for what? Bra space, है ना? Now, अब ये पूरी स्टोरी कैसे क्रिएट की जा रही होगी? Let's try to see this one. So, first you will operate B on phi. It will give you some buffer. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If you are going to operate B on phi, you will get some buffer, something you will get. Let's say this buffer is chi. हो सकता है ना? Now how you will write this thing for a bra part? Bra phi B dagger equals to bra. Very good. Bra phi B dagger is equal to bra chi. है ना? Good. Now A will operate on B phi is equivalent to A is operating on chi. Yes or no? Yes, sir. So A will operate on B phi and A will operate on chi. What will be your final solution? Psi. 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 Exactly. Very good. So this is your psi. Now, how you will write this thing for a bra part? Bra chi. Bra chi A dagger. A dagger must be equal to bra psi. Okay. And this chi bra can be written as B dagger phi from here. Yes. Yes, sir. इसको इस chi bra को यहां से लिख सकते हैं ना? What is this value? Phi B dagger A dagger is equal to psi. Now
you can equate this equation and this equation. What you will get? दोनों की इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? AB whole dagger. You will get AB whole dagger is equal to what? B dagger, A dagger. Clear है ये? AB whole dagger is equal to what? B dagger, A dagger. So we have proved this thing. So similarly, just tell me what will happen ABC whole dagger? C dagger, B dagger. D dagger, B C dagger, B dagger, A dagger. है ना? So you have to always keep in mind that how your dagger will come into picture and किस तरह से आप किट को ब्रा में ले जाओगे और ब्रा को किट में ले जाओगे तो किस तरह से स्टोरी चेंज होती है. So this is from my side of some information about operator. We will do some problems based on operators into the next class, and after then we will have two very important tools. One is eigenvalue and eigenvector tools, and another is probability density tool. ठीक है? So I request you that you can just revise your eigenvalue, eigenvector. हालांकि मैं करूंगा, सारे चीज करूंगा, बट आप पहले से थोड़ा करके रखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना? सो अगर अभी कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, एंड आई विल स्टॉप दिस क्लास राइट नाउ. सर प्लीज एक बार आप रिवाइज करा दीजिए, जो आपने प्रूफ किया वो नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा. कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा? चलिए आप खुद बोलिए. बी तो आप बताइए पहले कहाँ से ये समझ में आया? जी. तो ये भी समझ में आया होगा, हाँ या ना? यस यस सर. ओके, ये समझ में आया? यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये समझ में आया नहीं? यस यस सर. आ गया भाई. B5 पर ऑपरेट करे तो कुछ ना कुछ तो देगा. यस सर. तो अगर ये लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं या नहीं? यस सर. लिख सकते हैं. वेरी गुड. अब AB5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब A और काई लिख सकते हैं या नहीं? यस सर. यस सर. लिख सकते हैं. B5 के जगह पर A ये लिख सकते हैं, तो साई तो A काई पर मिलेगा तो क्या देगा? साई ही तो देगा, क्योंकि A B5 पर ऑपरेट करके क्या दे रहा है? साई दे रहा है. देख लो, A B5 पर A किस पर ऑपरेट करेगा? B5 पर. ये दिखाई दे रहा है? यस सर. है ना? A जो ऑपरेट करेगा पहले B5 पर, फिर तो A ऑपरेट करेगा ना. क्लियर है ये? सो A B5 पर ऑपरेट करेगा तो A इनडायरेक्टली किस पर ऑपरेट करेगा? काई पे. काई पे. सो A B5 पर ऑपरेट करके क्या दे रहा है? साई. साई. तो A काई पर ऑपरेट करके क्या देगा? साई. साई. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस सर. यस सर. है ना? और इसके जगह पर आप ये लिख सकते हो, लिख सकते हो इसके जगह पर. यस 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 सर. ठीक है, एक बार खुद ट्राई करो करने का. ठीक है? थैंक यू सर. हाँ, गुड. सो जस्ट ट्राई टू डू ईच एंड एवरीथिंग विथ योरसेल्फ. ये सारे चीज लगभग हम लोगों ने जो मेन एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, जो नोटेशन पार्ट है, उसको एक तरह से निपटा डाला है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर अ टूल्स ऑफ some basic two mathematical tools. One mathematical tools are matrices and another is what? Probability density. Matrices में mainly eigen value, eigen vectors, इसके बारे में बात करेंगे, and then we will go for probability density. ठीक है? Actually mathematical tool आज से ही शुरू हो गया, linearly independency and all this thing. So आप लोग को समझ में आ रही है चीजें? क्योंकि ये मुझे पता नहीं चल रहा आपको समझ में आ रहा है या नहीं. आ रहा है सर. आ रहा है? ये सर. ओके, गुड. चलो, सो डोंट वरी, शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट फाइनली आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो बहुत आराम से, है ना? तो दिस इज ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है? चलो, थैंक यू. थैंक यू Thank सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir.